So welcome you all in this particular video, guys. Today we'll talk about the Maharashtra B.Ed CET with respect to the 2021. Finally dates out हो चुकी है. काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर dates कब out होगी with respect to the B.Ed CET and ELCT. So guys, dates are out now. We'll talk later about this. We'll visit the official website and we'll start the step-by-step form filling process for Maharashtra B.Ed CET. So guys, watch this video till the end because हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है. लेटर ऑन हम ये पछताए. नेम चेंज हो चुका है, सरनेम चेंज हो चुका है, कास्ट हमने चूज नहीं की है एंड इवन मार्क्स एंटर्ड आर इनकरेक्ट. सो गाइस, ये सारे बहाने नहीं चाहिए. सो दैट्स व्हाई वॉच दिस वीडियो नॉट फॉर ट्वाइस, नॉट फॉर थ्राइस बट 5 टाइम्स. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड देन स्टार्ट योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. सो बिफोर मूविंग फर्दर, वी हैव लॉन्च्ड द क्रैश कोर्स बैचेस for the B.Ed CET, so you can prepare with us for 2021 and you can interact live with us for 2022 and 23 preparation. In live interaction, you can interact live with us. You will receive books at your doorstep. You will learn very shortcut tricks, all doubt class. You will get access for the recorded videos, topic tests, full length mock tests. WhatsApp group will be made where you can share all your doubts, and throughout this period you will solve around 10,000 plus questions, guys, in live interaction, and you will get the mentorship. So guys, what are you waiting for? Just call on 8828581455 or you can visit our website manualdu.com/B.Ed. Now let's move to the official website. So right now we are on official website of CET Cell. Okay guys, just scroll down and here it is, the Maharashtra B.Ed General and Special and B.Ed ELCT. Just click here. So the form filling process has started. That means registration process start हो चुका है and date is 13th of July to the 27th of July. So guys, you have only 14 days. Make sure आप सारे प्रोसीजर को एक बार ध्यान से समझ लो एंड देन स्टार्ट योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. गाइस, एज आई से इन एवरी वीडियो, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, गो टू द इंफॉर्मेशन ब्रोशर फर्स्ट. ओके, सो टिल देन अभी तक आउट नहीं हुआ है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर अब तक अपलोड नहीं हुआ है. गाइस, आज का दिन जाने दो, कल का दिन भी जाने दो आराम से. यू कैन स्टार्ट योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फ्रॉम 15th और 16th ऑनवर्ड्स. ओके, वेट नहीं करना है हमें लास्ट डेट का और ना ही हमें गड़बड़ करनी है ऑन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड डे. ओके, यहाँ हमें मिस्टेक नहीं करनी, इसके बीच में आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो. ओके गाइस, नाउ दिस इज द डेट. नाउ गो टू दिस ऑल इंस्ट्रक्शंस. ओके, एंड thereafter select I accept and proceed. So let's start with the form filling process. First, new registration process. Okay, go through all these instructions very carefully. Guys, पहले information सारी पढ़ लो in Marathi also and English also. Okay, you can choose your preferred language here. Thereafter, I accept and proceed. Now, here we'll start the registration process. Okay, first enter the personal details, father's name, mother name, gender, confirm your gender, date of birth, religion, thereafter region to which you belong, rural or urban area. Okay, thereafter mother tongue, if it is Marathi, Hindi, Gujarati, whatever language, जो भी language है guys, here you can select your mother tongue. Thereafter nationality. Okay, permanent address and the local address. Select your state. Candidate from Maharashtra state and all other India can apply for the B.Ed ELCT. You can fill the form accordingly. Select district here, select taluka and select village. Thereafter pin code, telephone number, one time password will be sent to the mobile number given for the activation of your login. गाइस, जैसे कि मैं हर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में आपको बताता हूँ, यहाँ जो भी मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड करने वाले हो उसे चेंज नहीं करना है टिल देन आपका कैप राउंड प्रोसेस कंप्लीट हो जाए. ओके गाइस, सो मेक श्योर आप वही नंबर दो जो करंटली एक्टिव हो. ओके, एंड कैप राउंड तक वो आपके पास ही रहे. ओके गाइस, बिकॉज सारे OTPs उसी पर आने वाले हैं. ईमेल ID, इज योर एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस सेम एज परमानेंट एड्रेस? यस, देन यू कैन क्लिक हियर. नो, तो आपको एड्रेस वापस फिल करना होगा यहाँ. ओके गाइस, नाउ चूज योर पासवर्ड. अब अपना पासवर्ड चूज कर सकते हो. ओके, कंफर्म योर पासवर्ड, एंटर सिक्योरिटी पिन गिवन बिलो, सेव एंड प्रोसीड. नाउ इफ यू आर फिलिंग योर फॉर्म फ्रॉम द साइबर कैफे देन गाइस, इसे नेवर करना ना भूलें. ओके, योर पासवर्ड एंड ईमेल ID विल शोन है. ओके, सेव और नॉट, अगर आपके पास आपका पर्सनल लैपटॉप है, PC है, देन यू कैन सेव इट. ओके, एंटर द वन टाइम पासवर्ड प्रोवाइडेड ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर. जो भी आपने नंबर एंटर किया है उसमें से आपको OTP यहाँ फिलअप करना है. ओके गाइस, सो माई OTP इज, ओके, वेरीफाई OTP. नाउ दिस इज माई एप्लीकेशन नंबर. Okay, now it says registered successfully for Maharashtra B.Ed CET 2021 and this is my application number. Okay guys, write down this application number and even you will get the message about this is your application number. Okay guys, now write down this particular number.
Now let's start the actual form filling process. Proceed to complete the application form. Okay, click here. Now enter your application number, enter your password and sign in. Now it says welcome to the online registration for Maharashtra B.Ed CET 2021. This is my application ID here. From here I can log out. Okay, this is the application number. Now it says registration details completed, candidate type, qualification details, Maharashtra B.Ed CET details, upload photo and signature, upload required document, proof of identity, preview and validation information, pay registration fee, print application form. So these all are the complete steps you have to follow. Now let's start one by one. Okay, so registration details almost completed, candidature type and reservation details. Click here. Now your type of candidature, if you are belong from Maharashtra state candidate, then you can select the MS. Now in that you will find 5 different categories. Okay, A, B, C, D and E. Okay, OMS for all India candidate and J&K migrant, that is nothing more Jammu and Kashmir migrant. Okay, so select your type. Now I select here type 1. So it says candidature type, candidate passing graduation, post graduation qualifying examination from recognized institute in Maharashtra state, and that means your graduation should be in the Maharashtra state. The candidate who is domiciled Maharashtra, candidate should have domicile certificate along with you or birth certificate, या फिर आपके मार्कशीट पर मेंशन होना चाहिए your place of birth. Okay guys, so this is type A. Now type A, type B, type C, type D and type E, I already make the videos on the YouTube, so you can watch that particular video too. Okay, now let's discuss in short. Now B, it is your graduation from the Maharashtra and the father or mother of the candidate is domiciled in the Maharashtra. Suppose you don't have the domicile certificate, you are not born in Maharashtra, but your father and mother having the domicile certificate, so you are a type B candidate. Thereafter type C, it says father or mother of the candidate is an employee of government, okay, of India or government of India undertaking who is posted and reported on the duty and work in the Maharashtra state. Okay, तो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल डिपार्टमेंट से हैं और महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं. Okay, so you are type C candidate. And thereafter type D, it says father or mother of the candidate is an employee of government of Maharashtra. Then type D and type E, that is disputed area of Maharashtra Karnataka border. Okay, so candidate mother tongue should be Marathi and candidate should have a domicile or birth certificate from the Maharashtra or disputed Maharashtra Karnataka border area. So these all are the types. Now you can select your type. I am selecting type A. Now category details. Now if you belongs to open category, you can select open here. बस आगे आपको कुछ fill up करना ही नहीं है. Now if you belong to any other category, then you have to select the caste to which you belong. Okay, these all are the different caste. Okay, you have to select from it. If you have a caste certificate with you, then you can select available, applied but not received. You applied for the caste certificate but you don't have the caste certificate. So if you will select applied but not received, then you have to enter the receipt number here and the caste certificate application date here. And thereafter, if you select available, then caste certificate number here. If you select not applied, then all vanish. आपको कुछ fill up करने की ज़रूरत नहीं है guys. Okay, so here I'm selecting my caste open. Enter caste name. Do you want to apply for EWS economical weaker section? Now yes or no. Here I select open category. If I have EWS certificate, guys, okay, listen carefully. If I have the EWS certificate, but यहाँ EWS mention नहीं है, what I will do, I will select open here and thereafter I will select yes here. Okay, so select EWS certificate. Okay, then I have to select available, applied but not received or not applied. Okay, if I select available, then I have to submit during the cap round process. Okay guys, if I am selecting here applied but not received, then I have to enter the application number here, application date, certificate issuing district and the issuing taluka. Okay, so all this information I have to fill. So right now, do you want to apply for EWS? Let's select no. Then आपको कोई fill up करने की ज़रूरत नहीं है. Let's select yes. So it will be helpful for all EWS category candidates. Okay. Now here I'm selecting select EWS certificate eligibility criteria for economical weaker section. Now available, applied but not received. So I don't have right now. So not applied. Okay. Now person, are you person with disability? Yes or no. Select accordingly. Do you belongs to minority category? Yes or no. Okay. And eligibility qualification. So select your qualification. If you have done your post graduation, आप select कर सकते हो graduation, then आप graduation भी select कर सकते हो. Okay.
Now save and proceed. Now qualification, second stage. Okay, SSC, add qualification, then board name, then board state, Maharashtra, board name Maharashtra State Board, marks obtained, seat number. Now बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सर सीट नंबर क्या है, कहाँ होता है. सो गाइस केयरफुली आप अपनी मार्कशीट देखो, आपके मार्कशीट पे क्लियरली लिखा गया है आपका आसन क्रमांक और द सीट नंबर. ओके गाइस, सो वहां से आपको ये सीट नंबर लिखना है. ओके, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट आस्किंग मी इन द कमेंट सेक्शन कि सर सीट नंबर क्या है, सीट नंबर क्या है. सो आपके मार्कशीट पे सीट नंबर दिया गया है. ओके गाइस, 10th हो या 12th हो. इफ ग्रेड देन यू कैन सेलेक्ट ग्रेड. ओके, क्लास आप सेलेक्ट कर सकते हो, पासिंग मंथ और ईयर. ओके, सेव. नाउ HSC, एड क्वालिफिकेशन, बोर्ड स्टेट, बोर्ड नेम. नाउ स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और वोकेशनल जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हो. पास, सीट नंबर अगेन, मार्क्स ऑब्टेन, ग्रेड इफ यू नो अबाउट इट आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज सेलेक्ट द क्लास. ओके, पासिंग मंथ एंड द ईयर एंड सेव. सो डेटा सेव सक्सेसफुली. नाउ यू कैन एडिट बाय क्लिकिंग हियर. ओके गाइस, नाउ ग्रेजुएशन, एड क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेजुएट. ओके, डिग्री लेवल, you can select your respective degree here. Okay, university state, university name. Now graduation, passing or appear. Now those candidates जिनके पास अभी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी जिन्होंने 6th सेम की एग्जाम दे दी है, रिजल्ट अभी तक मिला नहीं है, गाइज यू कैन सेलेक्ट अपीयर्ड हियर. ओके, सो यहाँ आपको कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है. इफ यू पास यू कैन सेलेक्ट पास हियर, देन क्लास, मंथ, ईयर, मार्क्स ऑब्टेन, out of marks, specialization subject if any, then you can select here. Okay, now all details are completed. Now save and next. Another one, it is about the Maharashtra B.Ed CET 2021 examination details. Okay, so do you want to apply for English medium colleges of education or do you want to complete your B.Ed in English medium? So बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में अभी भी ये क्वेश्चन है, ELCT के लिए हमें क्या अलग से फॉर्म फिलअप करना है? Then guys it is no. Okay, here it is clearly mentioned Maharashtra B.Ed CET 2021 examination details. If you want to pursue from the English medium colleges, okay, और आपको B.Ed अगर इंग्लिश मीडियम कॉलेज से करना है, इंग्लिश मीडियम में करना है, देन यू कैन सेलेक्ट यस हियर. अगर आप नो करोगे देन आपको कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है. ओके गाइस, सो यस. नाउ डू यू वांट टू अपीयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट ELCT along with B.Ed CET? then yes. Do you want to opt for special education colleges? अगर आपको स्पेशल एजुकेशन कॉलेजेस चाहिए यू कैन सेलेक्ट यस और नो. ओके, हियर आई एम सेलेक्टिंग यस. नाउ दीज ऑल, okay, because even a lot of my students are selecting some of the specialization, some of going for the learning disability, some has keen interest to pursue the B.Ed in hearing impairment or the intellectual disability. So guys, you can select accordingly here. Okay, now it is clearly mentioned in this particular form. Okay, if you want to opt for special education college, then you can select yes here. If you don't want to opt the special education colleges, then you can select no here. Okay, now अभी आपको कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली you can choose your centers. But if you select yes here, then these all are the respective specialization. So respective specialized colleges में ही आपको एडमिशन मिल जाएगा. Okay guys, so you can select here. Suppose here I am selecting learning disability. Okay, now the candidate opting for special education college will also be eligible for general B.Ed colleges also. Okay, here I am selecting the specialization, but again I am eligible to select the general B.Ed colleges also. So मैं BTTC को भी चूज कर सकता हूँ, इवन अगर उसमें ये स्पेशलाइजेशन समझो नहीं है तो मैं BTTC को भी चूज कर सकता हूँ, KG सोमैया को भी कर सकता हूँ, और जो टॉप कॉलेजेस है उनको भी मैं चूज कर सकता हूँ. ओके गाइज, एंड व्हेन ड्यूरिंग द कैप राउंड प्रोसेस. ओके, नाउ स्पेसिफाई प्रेफरेंसेस. Now select examination center at preference number 1, जहाँ आपको प्रायोरिटी चाहिए फर्स्ट. Right now I am in Mumbai, so I will select Mumbai city here. Thereafter I will select Mumbai suburban western, then I will select nearby Palghar. Now save and proceed. Okay, now you have to upload your photo and signature. Now select photograph here, open, upload. Now photo has been uploaded. Now it's time for signature. Open, choose your file, crop it of the desired size. Okay, it should be very clear. Okay guys, and make sure आप जो भी फोटो चूज कर रहे हो white background ही हो, so that will be more clear. Okay guys, now upload. Uploaded the photo and signature here. Now save and proceed. So moving to the next step, and it is select document which you are uploading. Now
you can select any of the document, PAN card, Indian passport, permanent driving license, learning license, not valid. Okay, voters ID card, bank passbook with photograph, Aadhaar card, e-Aadhaar card, print with the photograph, recent identity card issued by the recognized school or colleges, photo identity proof, and these all are. Okay, so here I am selecting the Aadhaar card. Okay, now upload Aadhaar card, open. Now here I am selecting and upload. Okay, so my document is uploaded here. Now और कोई documents आपको upload नहीं करने हैं. Okay guys, now save and proceed. So moving to the next step, the preview and validate application form. अगर आपको लग रहा है कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, then guys you can edit the form right now. Okay, so suppose मुझे यहाँ से कुछ edit करना है, I will select here and will edit the same. Want to appear for English language content test? Yes guys, all those candidates who are preferring ELCET or who are preferring the English medium colleges, then guys make sure आपने yes mark किया है at this particular step. यहाँ अगर आपने yes mark नहीं किया है, it's okay. Okay, if you are choosing for the specialized subject, then you can select yes here. But ELCT के लिए अगर preference है आपका, तो guys यहाँ yes होना चाहिए. Okay, so make sure आप अपने documents को जो भी fill up किया है, कम से कम 5 बार तो देख ही लो. Okay, now all these information are correct, then proceed for the payment. Now once payment done, you can't edit your application form. So guys make sure आपने सारी details correctly fill की है. After making payment, you will not be able to make any changes in the application form details. Okay, so if you want to proceed, click yes here. Total registration fee for open category it is 800 rupees. Okay, now click here and proceed to payment. Now I agree terms and condition and proceed. Now choose any payment mode. Either it may be net banking, wallet, credit card, UPI, जो भी जिससे भी आपको पेमेंट करना है guys, you can do your payment. Okay, 800 रुपीज़ की पेमेंट आपको करनी है. इफ यू बिलोंग्स टू ओपन कैटेगरी कैंडिडेट, SC/ST की फीस अलग से मेंशन की गई है. एंड आफ्टर द पेमेंट मेक श्योर गाइज आप प्रिंट ले रहे हो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की. ओके गाइज, सो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज वीडियो ऑल अबाउट द स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. नाउ स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, any queries in your mind guys, feel free to ask me in the below comment section and we'll try to answer all of your queries. Okay, so that's it from the today's video. If you want to start the preparation, you can interact live with us. Call on 8828581455 or you can also call on all these respective numbers. Guys, you can also visit our website themanvoedu.com for all exam updates and the notifications. You can follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So guys, that's it from the today's video. All the best for your preparation. And guys, हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले जो भी आपके डाउट्स है एंड क्वेरीज है. ओके गाइज, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो.